Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter International Organizations, and under this chapter we were doing the question we were discussing the questions which are given at the end of the chapter, and we have completed up to question number 8, and today we will start from question number 9. Now the question number 9 is that as a citizen of India, how would you support India's candidature for the permanent membership of the Security Council? Justify your proposal. So in this in answering this question, we have to give reasons why why we claim that India should become one of the permanent members of the Security Council. So in this regard, we have to present those arguments or those bases which proves that India is a powerful country, and it needs to be there in the Security Council. So in this regard, our first and the most important argument is the economic condition of our country. We can say that our economy is growing at a very large scale, and the economic growth rate is very good for the past so many years, especially after the starting of globalization, liberalization and privatization, which was started in the year 1991. After that, our economy is growing at a very good speed and GDP is also very high. So these are the most important reason for which we demand, we say that our place is there in the permanent membership of the Security Council. And after this, the second point, which is also very important, that is we are the world largest democracy, because in the past, whatever is the experience of our, it proves that democracy is stable in our country. We have regular elections. Our leaders are representing the ideas of the people, representing the interests of the people, and democracy is completely stable in the country. Okay, so this is the second point, and this is these 2 points, economic and political, they are the most important point. And then after that, we can also say that our country is the second most populous country in the world, and we see that 1/5 of the world population is in India. So this is very important. And in this regard, one more thing is there ki the proportion of younger people is very high in our population, and that is why India is called Youngistan. तो ये जो यंग पॉपुलेशन का जो उनका जो प्रोपोर्शन है टोटल पॉपुलेशन में, वो बहुत ज़्यादा है. ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे इस बात को क्लेम करने के लिए कि वी हैव अ परमानेंट मेंबरशिप इन द सिक्योरिटी काउंसिल. And then we will see that if we see from that point of view, then also India is a serious contender for permanent membership, as we are a regular financial contributor to the UN. Whatever we have to pay to the UN, everything is paid timely, and it was never delayed. So it is also one of the most important point. After that, we can also say that India participated in all the initiatives of the UN. India, not only this, India has also the foreign policy which is adopted by India is towards peacemaking. As we have seen that in the year 1953, Korean crisis was there,
and India played a very important role in solving that crisis. In the similar way, we can say that India is playing a very important role in establishing world peace and security. So, in this way, we can conclude our answer that as India is having so much, these above mentioned points are there, and it must be included in the permanent members of the Security Council. So now I am going to write down the answers. I always say you I start the answer with points, but your answer must contain introductory sentences. There must be some introduction, and after giving the introduction, your main answer will start, which will be in the points, and then after all the points you will have to conclude your answer also. So the structure of the answer is always introduction, then main part of the answer that will be in points, okay, and then the conclusion. तो अगर इसमें हमें इंट्रोडक्शन देना है, हमारा क्वेश्चन है कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू मस्ट सपोर्ट, नो, द क्वेश्चन इज एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया how would you support India's candidature for the permanent membership of Security Council? So in this regard, you will have to start your answer with India achieved its independence in the year 1947, and after that India is growing at a very, in all aspect, India, the country is growing in all aspect, and after 70 years of independence, we can say that India has emerged as a new center of power. And then the next sentence will be, we can say that Security Council is not representing the realities of the contemporary world. So there is need to restructure the Security Council, and there is need to include countries like India in the permanent membership of the Security Council. Then we will write ki following are the basis on which we can claim that we have a candidature in the permanent membership of the Security Council. So there must be an introduction to your answer, then only you should start your answer. Okay, तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कि India's economy is growing at a especially after adopting new economic policy in 1991. So this is your answer. First point, India's economy is growing at a good rate, especially after adopting new economic policy in 1991. You can elaborate this point also by including some points like GDP. You can talk about GDP. GDP is also very high, and our growth rate, the economic growth rate, is also high. So this will be your first point. And now we see the second point. The
political system of the country is stable as well as truly democratic. This can also be elaborated by adding some points, like you can say that we have from the last 70 years we are having we are having elections at regular intervals. Then the representatives of people are there in the parliament who are really doing the work for the people. So in this way you can elaborate all the points. Okay, and now we come to the next point. Now the third point is India is world's second most populous country. With one-fifth world's population. Okay, so this is also important, and in this regard you can also write the proportion of younger people is very high. So this is a positive point. Okay, and now we come to the next point. The next point is that India is a regular financial contributor to the UN. यूएन को हमारा जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है वो हमारा रेगुलर रहा है. देन द फिफ्थ पॉइंट इज we can say that India participated in the initiatives of in this point you can say किस तरह से हमने UN के जो इनिशिएटिव्स था उसमें पार्टिसिपेट किया. तो इसमें हमारा क्या होगा, एक एग्जांपल हम दे सकते हैं. जो श्रीलंका में इंडिया ने UN पीस कीपिंग फोर्स में अपने फोर्स को भेजा था इन ऑर्डर टू, जब वहाँ पर सिविल वॉर चल रहा था. तो जो इंडियन आर्मी वहाँ पर गई थी वो दैट वाज अंडर द UN पीस कीपिंग फोर्स. तो उसको हम यहाँ पर एज एन एग्जांपल डाल सकते हैं. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज
The next point is it's sixth point, maybe sixth or seventh, whatever point is there, number is not important. So the next point is India played prominent role in maintaining world peace and security. Okay, and in this you can also give that about that Korean Sankat. Okay, Korean crisis, not Sankat, Korean crisis. And now we come to the last point, which is very important, which I discussed during the discussion of the chapter. At that time I discussed, ये बहुत important है कि इंडिया का we can't say कि India should be there because there is no country from Asia, because China is always there, है ना. तो हमें ये नहीं कहना है कि हमें इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि हम एशिया को बिलोंग करते हैं. हमें ये कहना है, अगर हम वो कहेंगे तो फिर हमारा पॉइंट कमज़ोर हो जाएगा. क्यों? बिकॉज देर आर अदर कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो, लाइक साउथ अमेरिका, अफ्रीका, from where no country is represented in the Security Council. So other points हम दूसरे तरीके से हम इसको ये कहेंगे कि इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है. इन द UN what we find that the countries belong to, mostly the countries belong to Western developed group. So there must be representation from the developing countries also, and this in this regard India is the best candidate. Okay, so we will write India represents the developing countries as we see. India represent the developing countries as we see that in the UNSC. I am writing the short form. You are not supposed to write the short form. India represent the developing countries as we see that in United Nations Security Council, most of the countries are from Western developed countries. Developed okay. So this is also one of the most you can say strongest points में ये भी आता है ना, कि जो इंडिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. इंडिया represents the developing countries of the developing countries as we see that in UNSC most of the countries are from the Western developed group of countries. तो इस तरह से हम अपने कैंडिडेचर को ये करेंगे, सपोर्ट करेंगे. एंड देन our conclusion will be ki, as we have seen that we have these are the points which we can present in order to become the permanent member in the UNSC, and we must be given our due, which is the permanent membership in the
सिक्योरिटी काउंसिल. सो देयर मस्ट बी अ कंक्लूडिंग सेंटेंस इन योर आंसर. एक ही लाइन हो बट वो होना जरूर चाहिए. ठीक है. And now we will see the next question. The next question is critically evaluate the difficulties involved in implementing the suggested reforms to construct the UN. We have discussed about it, है ना. कि यूएन को रीस्ट्रक्चर करने की जो डिमांड आ रही है, उस डिमांड के रिगार्डिंग कुछ सजेशंस दिए गए थे, जिसके लिए जो इनिशिएटिव था वो कोफी अनान ने लिया था, जो कि उस समय सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के. तो उन्होंने कुछ उनके एफर्ट्स से, उनके इनिशिएटिव से ये रिफॉर्म्स के लिए क्राइटेरिया कि किस बेसिस पे हम न्यू मेंबर्स या न्यू परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबर्स को इंक्लूड करें, है ना. तो उसके लिए उन्होंने कई सारे सजेशंस दिए, लाइक इकोनॉमिक बिग पावर होना चाहिए, देन मिलिट्री पावर होना चाहिए, पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए. वी हैव डिस्कस्ड की, और उसको हमने क्रिटिसाइज भी किया था कि उसमें क्या लूप होल्स हैं. लूप होल्स मीन्स कमी, है ना. कि कहाँ से वो उसमें कमी हमें नज़र आ रही है. तो वही द सेम क्वेश्चन इज कि हमें इवेलुएट करना है कि अगर हम जो सजेशंस दिए गए हैं उनको अगर हम जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं. ओके. सो वी विल सी कि हम जैसे जो भी सजेशंस दिए गए हैं उसमें जनरलाइज सजेशंस हैं, क्वांटिफिकेशन नहीं है. आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी शुड बी बिग, बट हाउ बिग शुड बी द इकोनॉमी. क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए. अगर आप जीडीपी को क्राइटेरिया बना रहे हैं तो कितनी जीडीपी. अगर आप पर कैपिटा इनकम को बता रहे हैं तो कितना पर कैपिटा इनकम. अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बता रहे हैं तो कितने ग्रोथ रेट को हम मानेंगे कि हाँ इससे ऊपर है तो आप यू कैन बिकम द मेंबर ऑफ द परमानेंट मेंबर और ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, और इससे कम है तो आप नहीं बन सकते. तो ये जो क्वांटिफिकेशन जिसको हम कहते हैं वो नहीं है. ये एक जनरलाइज्ड व्यू दिया गया है जिसको कि इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इसका कोई यूज़ नहीं है, है ना. तो ये हम देन नेक्स्ट जो हमारा था कि जो बजट में जैसे कंट्रीब्यूशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, सब्सटेंशियल होना चाहिए, बट कितना. यही हर जो भी सजेशंस दिए गए हैं वो सारे जनरलाइज सजेशंस हैं जिनमें कि क्वांटिफिकेशन नहीं है, क्वांटिटी कुछ भी नहीं बताई गई है, बस एक जनरल व्यू दिया गया है. ये तो सब लोग जानते हैं, दीज आर द पॉइंट्स, ये तो सही है. लेकिन अगर हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उसको तो हमें क्या चाहिए कि एग्जैक्टली बताइए कि कितना होना चाहिए. देन ओनली वन एक वो तैयार हो सकता है कि हाँ किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए, है ना. तो ये प्रॉब्लम्स हमने फेस किया था. फिर ये कहना कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स के बारे में बात हुई थी कि ह्यूमन राइट्स का जहाँ पर रेस्पेक्ट हो रहा है, ह्यूमन राइट्स को सही ढंग से जहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट क्लियर. जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि जैसे यूएस जैसे कंट्री के जो हिसाब से काम करने वाले हैं, आज भी ये अलायंस सिस्टम इज़ नॉट देयर बिकॉज कोल्ड वॉर इज़ नॉट देयर, स्टिल सैटेलाइट कंट्रीज आर देयर. तो जो भी यूएस जैसे कंट्री के हिसाब से करने वाले, वहाँ पर अगर कुछ वायलेशन भी होता है तो उसको इग्नोर किया जाता है ह्यूमन राइट्स का. और जो उसकी एंटी वाले कंट्रीज है, अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी चीज़ होती है तो उसको काफ़ी वो किया जाता है, सामने लाया जाता है. जैसे इज़राइल, यूएस और इज़राइल इज़ हैविंग गुड रिलेशनशिप, तो वहाँ पर इज़राइल में जो कुछ भी होता है उसको कवर कर दिया जाता है. बट अगर यही किसी और कंट्री में इस तरह की कुछ भी बात होती है तो उसको मतलब जो कि यूएन के आगे यूएस के अगेंस्ट वाली कंट्री है तो उसको काफ़ी वो किया जाता है, उजागर जिसको हम कहेंगे, जिसको कि बिल्कुल हाईलाइट किया जाता है. तो ये चीज़ें और किस लेवल पे हम समझेंगे कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चीज़ें बिल्कुल भी इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, कौन सा सर्कमस्टांस था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो दीज थिंग्स कैन नॉट बी डिसाइडेड कि हाँ वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है और वहाँ पर नहीं हो रहा है. ये इसमें हम सही ढंग से इसको नहीं समझा जा सकता है. तो और इस बेसिस पे अगर हम किसी को परमानेंट मेंबरशिप देते हैं और किसी को नहीं देते हैं तो इट विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग, है ना. तो इसके जो पॉइंट्स हैं उसको अभी हम लोग
राइट डाउन करते रहें। In answering this question also, we can start our answer that when the suggestions which are given to reform the reform the United Nation are generalized suggestions. There are problems in implementing these suggestions because there is lack of quantification. You can use these terms. These are not such terms which cannot be used, है ना. क्वांटिफिकेशन ये क्वांटिटी से बना है. ओके ओके and we face following we may face, we are not facing, but we may face following difficulties in implementing the suggested reforms to reconstruct the UN, and then your answer will start. Okay, so we can write what should be the size of economy and what should be the economic growth rate. These questions remains unanswered. मतलब इन क्वेश्चंस का आंसर हमें नहीं मिलता है सजेशंस में, एंड इफ वी वांट टू इम्प्लीमेंट the suggestions, then this problem will arise. Okay, and now the next point is the military power of the country should be big, but how big it should be it is not clear. Then in the third point we can write that it is practically not possible to categorize. It is practically not possible to categorize countries on the basis of condition of human rights.
and democratic practices, है ना। अगर हम कह रहे हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होनी चाहिए, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक वे में काम होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, तो इनको भी हम नहीं समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल कैटेगराइज नहीं कर सकते कंट्रीज को कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है और यहाँ नहीं होता है। बिकॉज वॉट एवर हम देखते हैं, जो भी चीज़ें सामने आती हैं, एक्चुअली वो वही हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। सो दिस इज योर third point, and now we come to the fourth point. What level of contribution in budget, what level of contribution in budget is required? And the last point, which is very important for us also, because it is given that in the suggestion that there should be geographical representation. In the issue of equitable representation should be decided by geography, but our point is instead of considering geography, we should consider the economic development levels of economic development. So our point is equitable representation should not be done on the basis of geography, instead it should be done on the basis of level of economic development. So this is all for today, and we will discuss remaining questions in the next class.